Okay, students, I welcome you to this lecture. In this lecture, we will solve different examples from the various concepts to have a good revision this course. Here you can see that in this example, we have a signal flow graph. And what is required from us is to find whether the given system is controllable or not. What you can see over here is a signal flow graph. This is a signal flow graph that is given to us, and we have to find whether the given system is controllable or not. Recall that in order to find controllability, we have to find the controllability matrix. We have to find the controllability matrix. Controllability matrix, as you can see over here, this is the controllability matrix. From the state variable model, we take the B matrix in the first column, then we multiply A matrix with B matrix, and we put that in the second column, and then A square, B, and so on. We go up to the order of the system, and n minus 1, the order of the system. That is, if order of the system is 3, we don't know the order of the system yet. But if the order of the system is 3, then we have to go to A square. We multiply A with A and then with B. In this way, we make the controllability matrix. And then we find the determinant of controllability matrix to see whether it's full rank or not. If the determinant turns out to be 0, then this means that it is not full rank matrix, and the system system to be controllable, the determinant must be non-zero. So that is what we do. So the strategy of solving this problem is this signal flow graph, and they have asked controllability. In order to solve this problem, we have to make a strategy is that we will first make the state variable model, and then from the state variable model we will take the matrices A, B, and we will find the controllability matrix. The controllability matrix will be then checked for being full rank or not, and that is done by finding its determinant. So that is the way how we will solve this problem. So as a first step in the signal flow graph, we will assign a state variable to output of each integrator. Here we have an integrator over here, this is an integrator, and this is an integrator. And the output of each integrator we assign a state variable. This is x1, this is x2, and then x3. And of course, if the output of an integrator is a state variable, then its input would be the derivative of that state variable. If we have x1 over here, then the input of the integrator would be x1 derivative, x1 dot dx1 by dt. Similarly, if we have x2 over here, then the input of this integrator would be x2 derivative. In this way, we assign the input, the name of the input variable of the integrators. Each integrator input is assigned the name, and that is the derivative of the output state variable. Now we are in a position to write the state equations and the output equation. So here you can see that if you look at the signal flow graph, this is our x1 derivative, and that is equal to this signal and this signal from here coming from this branch and from here this branch. So logically, the equation for x1 derivative would be x2 minus x1. That is exactly what we have written over here. As you can see, x1 derivative is equal to x2 minus x1, straight from the signal flow graph. Now we have the second equation, which you can see over here for the second state variable. Now look at the signal flow graph again. This is our x2 derivative, and this x2 derivative is equal to u and minus x2 from here. So we write x2 derivative is equal to minus x2
plus u, as you can see over here. Similarly, now for x3 derivative, which is over here, x3 derivative is equal to u minus 2x3. x3 derivative is equal to this u and then minus 2 into x3. That is exactly what is written over here. x3 derivative is equal to minus 2 x3 plus u. And now the output. If you look at the output over here, this is the output. Then we have 10 times x1 minus 10 times x2 and 10 times x3. They all are added together. So the output equation is, therefore, you can see over here 10x1 minus 10x2 plus 10x3. Now in the next step we will write them in form of matrices, and here x state variable is a column vector with x1 in the first row, x2 in the second row, and x3 in the third row. And similarly, this is the derivative of the state variable, this is the derivative of the state vector, and it's a single derivative. There's one dot over here, there's some misprinting over here, so it's just one dot. So taking the coefficients and arranging them in form of matrix, we have this system matrix A like this. Since we had x1 was minus x1 derivative was minus x1 plus x2, therefore we have over here minus 1, then 1, and then 0. And for the in this equation we have no x1, therefore we have 0 x1 here, 0 for the column corresponding to x1, then we have minus x2, that is minus 1 over here, and then there is no x3 over here, 0 x over here, and then we have 1 over here for u in this thing. Then we have the third state equation, third variable state equation. Here you can see that there is no x1 or x2 on the right hand side, therefore we have zeros over here, and then we have this minus 2 which is written over here, and this u is, this 1 is over here. So in this way we have the state equation. Now the output equation, we write this in form of this 10 corresponding to the coefficient x1, then minus 10 is over here, and 10x3, this 10 is over here, and this is our state vector. So this gives us the state variable model. In the controllability matrix, what we do is that we will make this matrix B, AB, A square B. And since you can see that in the system matrix we have, and this number of state variables are 3, therefore the order of the system is 3. So we take this A in the controllability matrix up to n minus 1, that is A square. So that is exactly what we are doing over here. We write the B matrix over here, then we multiply A with B matrix, we write it over here, this is our A matrix and this is our B matrix, and then we multiply A matrix with itself, so it becomes A square, and after A square is then multiplied with B matrix, and we get this thing. So we have the controllability matrix. Next we find the determinant of this controllability matrix, as you can see, and it turns out to be minus 1. This means that since the determinant of controllability matrix is not equal to 0, therefore the controllability matrix is full rank, and hence the system is controllable. So the final answer that we get from this example is that our system, our given system, is controllable. Try to solve this example, take out a piece of paper, notebook, etc., and work out with, so you can go through each and every step of this example and solve it, and send me its scanned version. If you have any question, any problem, any query to ask, feel free to contact me, ask me, and get the questions answered. Now we are starting with our second example, which you can see over here. We are given a plant transfer function g of s, as you can see over here,
And we are supposed to design a state variable feedback control in such a way that the closed loop system gives us a 9.5% overshoot and a settling time of 0.74 seconds. It's a very easy problem. If you remember the formula from chapter number 4 and lecture number 3 and 4, you can very easily understand that this overshoot means that you get the value of zeta from here and you get the value of zeta and omega n both and omega n from here. Once we have the value of zeta and omega n, we can very easily find the dominant closed loop system pole. When the system has been designed, when the state variable feedback has been implemented in it, it will have certain closed loop poles. Then the dominant poles, those poles which dominate the response of the system, those poles are simply obtained or determined from here. Since the system is third order system, as you can see from the plant transfer function, therefore apart from these two dominant poles there must be a third pole. That pole will be assumed. We will assume that, suppose that pole by our choice, and we can suppose it to cancel out the zero, which open loop zero, which you can see over here. We can design it to cancel out this open loop zero, but that is not necessary. We keep close to it. We can keep close to it. And let's move forward. So first of all, as a first step in solution, we want to have the characteristic equation, desired characteristic equation. That is the characteristic equation of the final end target that we want. So you can see over here the settling time is 0.74 and settling time is time constant multiplied with 4. Therefore we obtain the time constant by dividing settling time by 4. And we know that the time constant is equal to, for an underdamped second order system, time constant is 1 upon zeta omega n. When there is an overshoot, the system is underdamped system. So time constant is 1 upon zeta omega n. From here, when we divide this by 4, we get 0.185 seconds, and that is r1 upon zeta omega n. So by taking the reciprocal, we get the value of zeta omega n to be 5.4. We know that the pole is, this is from again from chapter number lecture number 3 4. If you don't remember, you must refer to that. The poles are, the real part of the pole is minus zeta omega n. We simply get the real part of the pole from here. Zeta omega n is 5.4, so we get real part of the pole directly from here. And negative sign is there, it should be there because negative sign is in the formula, and negative sign means that the pole is on the left hand side of j omega axis, or it's a stable pole. We can't keep it positive, we can't keep the closed loop pole on the right hand side and make the system unstable. So we directly get the real part of the closed loop, dominant closed loop pole from zeta omega n, which is the time constant, and time constant is obtained from settling time. Now the next thing is that we need to find zeta. If we don't know zeta, we know zeta omega n, product of zeta with omega n, and we don't know omega n at the moment, so we need to find zeta. And other thing that we need is that we need to find the imaginary part of the dominant pole. Imaginary part of the dominant pole by formula is this: plus minus j under root 1 minus zeta square omega n. So we can obtain zeta from overshoot. We can directly obtain zeta from overshoot by using this formula: e raised to the power minus zeta upon under root 1 minus zeta square is equal to 95%, that is 95 divided by 100. So by solving this, there is only one variable involved here. You can find the value of zeta. You take out a piece of paper and try to solve it and send me what value you have found. And once we have that value,
then we know that zeta omega n is equal to 5.4. So if we divide 5.4 by the value of zeta which we obtain here, we will get omega n from here directly. So we have the value of zeta as well as omega n. When we use this formula, we get the imaginary part of the pole. We get the imaginary part plus minus j under root 1 minus zeta square omega. That turns out to be plus minus j 7.2. That is the imaginary part of the pole. So the complete pole, and in fact we have two poles, we have a pair of pole, a conjugate pair of poles, is this. Real part is minus 5.4 and then plus minus j 7.2. These are the two dominant poles. The system is third order, therefore we must have another pole also. As I said in the start of this problem, that we need third pole and we will assume its location. And we can assume its location to cancel out the open loop 0, plant 0, but here we are not doing it, we are taking it close to that. So this is our supposed or assumed closed loop pole, and it's a real pole. It's the third one. It's therefore it has only real part and no imaginary part. So on the basis of these three poles, we can construct our characteristic equation, desired characteristic equation, which you can see over here. How we do it? This is our third pole at minus 5.1, s plus 5.1. Then the two complex poles, s plus 5.4 plus j 7.2, s plus 5.4 minus j 7.2. When we multiply these and open these brackets together and equate to 0, that gives us the characteristic equation which you can see over here. S cube plus 15.9 s square plus 136.08 s plus 413.1 equals to 0. That is half of the project problem is done. Now let's focus on the plant. Now what next we want to do is that we have the plant transfer function. Our strategy would be, we will first of all make the simulation diagram in form of signal flow graph, and from the simulation diagram we will make the state variable model. And once we have the state variable model of the plant, then we will use the usual method that we have used for the state variable model and state variable feedback, which is covered over here next. So first of all, we make the simulation diagram. For simulation diagram, we multiply divide by s cube and we get this form of the transfer function. And then from this, we make the simulation diagram. We connect three integrators in series, which you can see over here. And then the output is obtained from the numerator, that is 100 by s cube. A signal gets integrated 3 times. When it reaches here, then it multiplied with 100, then becomes y. Signal is integrated twice and multiplied with 20 and then becomes y, like we have done in previously with the block diagrams. So this part is for the numerator, and now we focus on the denominator. This one corresponds to this input signal, and we have a plus sign over here, so we use negative feedback, like I had mentioned in the class as well. When we were having the conventional classes, we have the signal gets integrated once, it is multiplied with 5, and we have a negative feedback. That is what is happening. The signal gets integrated once, then multiplied with 5 and a negative feedback, therefore multiplied with minus 5, and goes to this node. Then as far as this term is concerned, signal gets integrated twice passing through here and then multiplied with 4, then we have a negative feedback minus 4, and then it goes over here. In this way we make the signal flow graph, a simulation diagram in form of signal flow graph. Now what we do next is that we assign a state variable name at each node, here, here and here.
You can start from this side, say calling it x1, x2, x3, or you can do it this way as well, the way we have done x1, x2 and x3. The output of an integrator is x1, then the input must be x1 derivative. If output is x2, then the input must be x2 derivative. If output is x3, then the input should be x3 derivative. So on the basis of this, we can write the state equations, which you can see here. The x3 derivative, which is over here, is equal to minus 5x3 minus 4x2, because we have x2 over here, and u from here. Please try to solve it on paper, and if you have any problem, feel free to contact me. X3 derivative is over here, and it is equal to u, which is over here, then minus 5x3, which is over here, then minus 4x2, which is over here. So we have the one of these state equations. Then we know that this signal is, which we call x3, it is also x2 derivative, because it is the input of the integrator. One signal, two names. One name is x3, the other name is x2 derivative. Therefore, we simply write the equation x2 derivative is equal to x3. Similarly, for this is x1 derivative, which is also x2. So we have x1 derivative is equal to x2. We have these state equations now with us. Then the output. As far as the output is concerned, if you look at this, this is 100x1 plus 20x2. That is exactly what is written over here. So we write it in form of matrix, and we have this. If you look at the first state equation, there is no x1 over here, there is no x1 here, no x1 here. Therefore, the first column is completely made of zeros. And then we write the coefficients of x1, x2, x3. These are the coefficients of x1, these are x2, and these are x3. And this is the input matrix. And then we can write this as well. But we have the system matrix, A matrix for the plant over here and the B matrix. And we know that for state variable feedback control, we use the control law U is equal to minus kx. U is equal to minus kx. We use this control law. For that, when we make this substitution in place of u over here, minus kx, then the new system will have this system matrix, calligraphic A minus bk. When we make the substitution of the control law, which I have told you, using the minus kx, then this becomes the new system matrix of the system with the state variable feedback control, the system that we are trying to make. That system will have this A matrix, A minus bk. K matrix, K is a row vector, and it consists of k1, k2 and k3. K matrix is a row vector, and it consists of k1, k2 and k3. So when we put the values of A, B and K over here and solve them, we get the calligraphic A matrix as shown over here. This is our calligraphic A matrix. Now what we do next is that we make the required closed loop system characteristic equation that can be obtained by using this Si minus A, but here we are using calligraphic A, new A. Si minus A determinant, that will give us the denominator of the new system's transfer function, that will give us the characteristic polynomial. When we equate that to 0, that will give us the characteristic equation. So we take the determinant of Si minus A, where A is the calligraphic A,
and we put this A, which you can see over here, in this equation and take the determinant, we get this result, which you can see. It has the unknowns K1, K2 and K3. Now what next? On one hand, we have the characteristic equation which we designed on the basis of required closed loop poles which were obtained on the basis of the transient response, overshoot, settling time requirements, etc. And on the other hand, we have this characteristic equation which we've just found in the previous slide. And we want the closed loop system to behave like this, to have these poles, to have this characteristic equation. So we equate both equations. When we equate them, we get these three equations. This thing is equated with this thing is equated with this thing is equated with this. So when we have these three equations, we solve them and we obtain these values of K3 is equal to 10.9, K2 is equal to 132.08 and K1 is equal to 413.1. And this solves our problem. And the control law that we have used is U is equal to minus Kx. So designing state variable feedback control is all about finding these constants K1, K2, K3, and we have designed the state variable feedback control system. Any questions, queries, problems, feel free to ask me. Here let's solve another example. In this example we are given this system and we are supposed to make the root locus of this system. The transfer function of the plant is s plus 2 upon s plus 1, s plus 3, and in the feedback we have 1 upon s in integrator and there's a negative feedback. So the plant has a 0 at minus 2 and pole at minus 1 and minus 3, and the feedback gain, the transfer function of the sensor, has a 0 at the origin. So the open loop function gh is as shown over here in this slide. This is our gh, s plus 2 upon s plus 1, s plus 3, and we are supposed to make the root locus of the system. The open loop poles are s is equal to 0, minus 1 and minus 3, as you can see over here, and the open loop zeros are, as you can see, that we have only one finite 0 at minus 2, which you can get from here by equating to 0. Now there are three finite poles and one finite 0. Therefore n is equal to 3 and m is equal to 1. The number of zeros at infinity would be alpha is equal to n minus m, and that turns out to be 3 minus 1 equals to 2. So we have two zeros at infinity, there are two asymptotes. Now the angle of asymptote is obtained from this theta is equal to r 180 upon alpha, and we put alpha is equal to 2 in it, so we get the angle of plus minus 90 degrees. The centroid, that is the point on the x-axis where the asymptote lines cut, is obtained by sum of all the poles, finite poles, and sum of all the finite zeros divided by the number of finite poles minus the number of finite zeros. When we substitute the values of the finite poles over here and the zero over here and their quantity in the denominator and solve it, we get centroid at minus 1, which you can see over here. Now on the real axis, the root locus is supposed to lie on the left hand side of the odd number of critical frequencies. So here on this is a sort of complex plane which we have drawn over here, and we have the y-axis, imaginary axis over here, and this is the real axis. We have a pole over here at the origin because there is a pole, open loop pole at s equal to 0. Then we have this pole, then we have a 0, and then we have a pole. So this region is the left hand side of one pole, therefore root locus on real axis can lie here. And this is the left hand side of three critical frequencies, two poles and one zero, therefore root locus can lie on here.
So the range that turns out to be from this is, this thing means that s is between -3 and -2, and this thing means that s is between -1 and 0. This means that root locus on real axis can lie in these ranges. Now the last thing that we have to find next is the breakaway points. For breakaway point, the open loop function numerator is polynomial is s plus 2 and denominator polynomial is this thing. We open the bracket, it becomes s cube plus 4s square plus 3s. And we have this equation n d dash minus d n dash, that is n into derivative of d minus d into the derivative of n, that is equal to 0. We equate it to, we solve it and find the breakaway points. So here we have solved it, opening the brackets, subtracting the terms, and finally we find the, you rather have to find the roots of this equation. Try to complete this problem, try to solve it, make the root locus and show it to me, scan it and send it to me, and show it to me. Find the values of the roots of this equation. This will give us the breakaway points. So we get the breakaway points from here. So our root locus would be something like this. We have, first of all, we draw the open loop poles, then the open loop 0 at this point in the complex plane. Then our centroid was -1, therefore we draw the asymptote line passing from -1. In this way we have drawn it. And then we know that the root locus lies in this area and in this area. And the poles always move towards the zeros. Open loop poles move towards the open loop zeros. And root locus is always symmetric about the real axis. So we draw this pole moving towards this 0, and then we have the breakaway point which you have to find. It will be between, in this range. The other breakaway points are discarded. The breakaway point that fall in the range, that is between 0 and -1, that is to be considered. So our breakaway point will be somewhere here, which you have to find. Okay, and one of the pole moves upward from the breakaway point and starts following this line towards infinity, and the other one towards minus infinity, and reach the 0 at minus infinity. The other pole reaches the 0 at positive infinity. In this way we will have our root locus, which you can see over here. This is our result, final root locus, which we have drawn in this problem. If you have any problem, any question, immediately contact me, write to me, send me voice note, call me, send a text message, and get your queries addressed. Try to solve it, open the book, read it, and try to solve the problems and try to learn the things. It, the things that you have learned, they will come handy to you. You will get benefit from those. Your grades, your marks, they should be secondary thing. Real thing is the concept. You should have the concept and the understanding and the skill, ability. That is more important. Remember that. So please try to understand things and try to keep your concepts clear. अच्छा, ये जो लेक्चर का हिस्सा है, इसमें हम उर्दू में जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि जी उर्दू में भी लेक्चर का कुछ पोर्शन होना चाहिए ताकि हमारी समझ में बातें आएँ। तो जो इसमें से ऐसी बातें थी जो कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मैंने जो है उर्दू में कवर किया है। देखिए जी, इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन हमें दिया गया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सामने। GS is equal to 20 S plus 5 upon S, S plus 1, S plus 4। इसमें कहा यह गया है कि हमें स्टेट वेरिएबल फीडबैक कंट्रोल डिज़ाइन करना है, यानी कि वो जिसके अंदर जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनको हम उठाते हैं और कुछ गेन्स होती है K1, K2, K3, उनके साथ मल्टीप्लाई करके फीडबैक में भेज देते हैं और उसकी मदद से हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सिस्टम को। क्लोज लूप सिस्टम जो कि डिज़ाइन कर दिया जाएगा, मतलब डिज़ाइन आपने कर लिया है, तो उसकी कुछ परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स हैं।
वो सवाल में दिए हैं कि उसमें ओवरशूट हो 9.5% और उसका सेटलिंग टाइम 0.74 हो। ये सवाल में बताया गया कि ऐसा कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करें कि जिसकी ये जो है वो ओवरशूट और सेटलिंग टाइम की वैल्यूज हो। अब इसमें से एक चीज आप जहन में रखें, जब भी ओवरशूट की बात आती है तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें जीटा मिल जाता है डायरेक्टली। सीधी सीधी इसकी इक्वेशन है जीटा की ये वाली, e raised to the power zeta pi upon under root 1 minus zeta square is equal to the percentage overshoot 9.5 divided by 100। यहाँ से हम zeta सॉल्व करके निकाल लेते हैं। और जो आपको ये इन्होंने सेटलिंग टाइम बताया है, तो सेटलिंग टाइम से हमें फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आपको कोई मसला नहीं होगा। फॉर्मूला इसका होता है, सेटलिंग टाइम जो है वो टाइम कांस्टेंट को 4 गुना कर दें तो सेटलिंग टाइम होता है, यानी टाइम कांस्टेंट है वो टाइम कांस्टेंट सेटलिंग टाइम डिवाइडेड बाय 4 है। और जो टाइम कांस्टेंट है ये होता है बाय फॉर्मूला 1/जीटा ओमेगा एन। तो यहाँ से हमें जीटा और ओमेगा एन मिल जाएगा। ओवरशूट से हमें जीटा मिल गया, यहाँ से जीटा ओमेगा एन मिल गया, तो हम यहाँ से जो है ओमेगा एन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जीटा भी है, जीटा ओमेगा एन भी है, तो हम ओमेगा एन भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब एक बात नोट करने वाली ये है कि जो हमारा हम ये सब कर रहे हैं इससे हमें 2 अदद पोल्स मिलेंगे, उनको हम डोमिनेंट पोल्स कहते हैं, यानी कि वो डोमिनेट करते हैं, उनकी वजह से बाकी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उन पर डिपेंड कर रही होती है। 2 इसलिए होंगे क्योंकि ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में मिलेगा, जो पोल रियल एक्सिस के ऊपर होगा वही उसके नीचे भी होना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात ये कि हमारा जो प्लांट है वो थर्ड ऑर्डर का है, इसके डिनोमिनेटर में एस की पावर 3 है, तो हमारा जो क्लोज लूप सिस्टम होगा वो कैसे सेकंड ऑर्डर का बन गया, तो उसको भी थर्ड ऑर्डर होना चाहिए। तो 2 पोल्स तो हमने यहाँ से निकाल ली, एक तीसरे की भी जरूरत होगी, वो तीसरा हम खुद से सपोज करेंगे अपनी मर्जी से, ये नहीं कि कहीं पे भी रख दिया, वो देखभाल के रखा जाता है। इस कुछ शराइत होती है जो इनमें से एक पॉइंट हम सिर्फ आज कंसिडर करेंगे। बहरहाल यहाँ पे आपके पास जो है वो टाइम कांस्टेंट से जीटा ओमेगा मिल गया, तो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये कहता है कि क्लोज लूप पोल जो होता है वो होता है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे बीटा ओमेगा एन। ये हमने फॉर्मूला लेक्चर 3-4 में पढ़ा था। इसमें जो बीटा है ये होता है अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जो अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इधर नजर आ रहा है, ये बीटा है, इसको बीटा भी कहते हैं। तो फॉर्मूले के मुताबिक जो हमारे रिक्वायर्ड क्लोज लूप पोल का रियल पार्ट है वो तो हमें डायरेक्टली यहाँ से मिल गया। आपने सिंपली इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका रियल पार्ट आ गया -5.4। जीटा ओमेगा एन है 5.4, तो -5.4 हमारा रियल पार्ट है डोमिनेंट पोल का। तो हमारे पास रियल पार्ट आ गया क्लोज लूप पोल। अब आप आगे बढ़े तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो फॉर्मूले की रूप से वो ये बनता है, ठीक है। इसके लिए हमें ओमेगा एन और जीटा की वैल्यूज पता है। जीटा तो मैंने आपको पहले बताया था, वो ओवरशूट से निकल आएगा। ओमेगा एन जीटा ओमेगा सेटलिंग टाइम से जो हमने जीटा ओमेगा एन निकाला है उसमें से अगर आप जीटा ओमेगा एन को डिवाइड करें तो ओमेगा एन मिल जाएगा वहाँ से। ये दोनों चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है और जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आप उसमें ये कैलकुलेट करके मुझे स्कैन करके सेंड कीजिएगा। यहाँ से हम जो है वो इस फॉर्मूले की मदद से इमेजिनरी पार्ट निकाल लेते हैं, प्लस माइनस जे अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन। ये हमारे पास आता है जब इसमें जीटा और ओमेगा एन की वैल्यूज रखते हैं, तो प्लस माइनस जे 7.5। इन सारी बातों से हमें जो है डोमिनेंट क्लोज लूप पोल मिलता है दिस। ये हमारा डोमिनेंट क्लोज लूप पोल, यानी 2 पोल्स हमारे जो है वो यहाँ पे हैं। इसके अलावा तीसरा पोल कहाँ होना चाहिए ये हम अपनी तरफ से अपनी मर्जी से सपोज करते हैं। वैसे तो हम कोशिश हमारी होती है कि पोल जीरो कैंसिलेशन करें, तो हमारे पास ओपन लूप सिस्टम जो है उसका एक 0s -5 के ऊपर है, तो हम चाहेंगे कि हमारा जो है वो पोल इसके ऊपर हो या इसके करीब हो, तो यहाँ पे हम उसके करीब रख रहे हैं, आप उसके ऊपर रख लें। ये हमारी चॉइस है, हमने अपनी मर्जी से ये सपोज किया है।
देखिए रियल वर्ल्ड जो सिस्टम आपका है उसमें एग्जैक्ट पोल जीरो कैंसिलेशन कभी भी नहीं होती। जब आप सिस्टम को बनाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि पोल जीरो एग्जैक्टली कैंसिल हो गया। जैसे कि अगर हमने 5 पे रख दिया, -5 पे पोल को रख दिया, तो उसने पोल जीरो कैंसिलेशन कर दी और कहानी खत्म जीरो की, नहीं। बल्कि उसके आसपास करीब करीब कहीं होगा और उसका इफेक्ट रहेगा। इस वजह से हमने इसको -5.1 रखा है, इसको एग्जैक्ट 5 के बराबर नहीं रखा कि पोल जीरो कैंसिलेशन हो गई और कहानी खत्म हो गई, उससे करीब रखा है, ताकि हम जब सिमुलेशन करेंगे, जब आप लोगों को ये करना है इस लेक्चर के बाद के सिमुलिंग मैटलैब के ऊपर उसको सिमुलेट करें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप सिस्टम को, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आप एक दफ़ा इसको रख दीजिएगा -5, दूसरी दफ़ा -5.1 रखिएगा। ये हमारा तीसरा क्लोज लूप पोल है। दो तो हम निकाल चुके हैं, ये दो हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा पोल है। अब इनकी मदद से हमने जो है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, जिसको हम कहते हैं डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी जिधर हम चाह रहे हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, वो वाली इक्वेशन कैसी क्या होगी। तो वो आपके पास इस तरह से आती है कि हमने ये तमाम पोल्स रखे ब्रैकेट्स में। ये हमारा पोल था तीसरा जो हमने सपोज किया था। ये दो पोल्स हमने जो फाइंड किए थे ओवरशूट और सेटलिंग टाइम से, ब्रैकेट्स को ओपन किया, ये हमारे पास डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। यानी हम चाहते हैं कि हमारा क्लोज लूप सिस्टम ऐसा हो कि जिसकी ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बने। ये एक कहानी हो गई खत्म। अब दूसरी कहानी ये है कि हमें जो है वो K1 K2 K3 की वैल्यूज निकालनी है। उसके लिए हमारे पास हमने जो तरीका सीखा था वो स्टेट वेरिएबल मॉडल का था, जबकि हमें ट्रांसफर फंक्शन की शक्ल में प्लांट दिया गया। तो अब हम क्या करें, तो इसका मसले का हल ये है कि सबसे पहले हम सिमुलेशन डायग्राम बनाएंगे अपने प्लांट का, ओपन लूप फंक्शन का सिमुलेशन डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हमने एस क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो इंटीग्रेटेड की फॉर्म आ गई। इसको फिर हमने इसका सिमुलेशन डायग्राम बनाया, जो कि वही तरीका है जो कि आपके क्लास में हम बता चुके हैं। 3 इंटीग्रेटर्स पहले जो है वो सीरीज में लगाएं, बिकॉज थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। फिर उसके बाद जो है न्यूमरेटर वो हो जाएगा फॉरवर्ड पाथ में, कि सिग्नल जो है 3 मरतबा इंटीग्रेट हुआ, 100 से मल्टीप्लाई होकर वाई बन गया। यहाँ पे 100/s³ आ रहा है। फिर उसके बाद सिग्नल आपका जो है 2 मरतबा इंटीग्रेट हुआ, यहाँ से 2 मरतबा इंटीग्रेट हुआ, फिर 20 से मल्टीप्लाई होके y बन गया। तो ये हमारा फॉरवर्ड पाथ हो गया। अब आप फीडबैक पाथ में यहाँ 1 है, ये 1 है, तो ये हमने 1 को इधर कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने जो है यहाँ पे देखें कि ये 5/s है, सिग्नल एक दफ़ा इंटीग्रेट हुआ, 5 से मल्टीप्लाई हुआ, नेगेटिव फीडबैक में चला गया, और सिग्नल फ्लो ग्राफ है, इसलिए हमने -5 यहीं पे लिख दिया। ब्लॉक डायग्राम होता तो यहाँ पे लिखते हैं। तो इसके बाद फिर अगली टर्म में क्या है, सिग्नल जो है वो 2 मरतबा इंटीग्रेट हुआ, इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई हुआ, और नेगेटिव फीडबैक है तो -4, और ये वापस चला। इस तरीके से हमने डिनोमिनेटर से फीडबैक पाथ बना दिया। ये हमारे पास सिमुलेशन डायग्राम आ गया। अब इस सिमुलेशन डायग्राम में हम क्या करेंगे कि सिग्नल फ्लो ग्राफ की शक्ल का सिमुलेशन डायग्राम, हर नोड को एक वेरिएबल का नाम असाइन कर दें, x1 x2 x3, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। जो नोड्स हमारे पास हैं यहाँ पे इंटीग्रेटर्स की आउटपुट, उनको आप स्टेट वेरिएबल का नाम असाइन कर दें, x1 x2 और x3। अगर इंटीग्रेटर की आउटपुट x1 है तो उसकी इनपुट x1 का डेरिवेटिव होगा, अगर आउटपुट x2 है तो इनपुट x2 का डेरिवेटिव होगा, अगर आउटपुट x3 है तो इनपुट x3 का डेरिवेटिव होगा। इस तरीके से हमारे पास कुछ स्टेट इक्वेशंस भी आ जाएंगी। अगर आप देखें यहाँ पे ये x3 का डेरिवेटिव है तो ये बराबर है u -5x3 -4x2। ये हमने इक्वेशन लिख दी है। x3 डेरिवेटिव इक्वल टू -5x3 -4x2 प्लस u। इसके बाद जो x2 जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे, ये x1 का डेरिवेटिव भी है, यानी एक ही सिग्नल है, दो नाम है, x2 और x1 का डेरिवेटिव। इस बेसिस पे हमने जो है यहाँ पर ये इक्वेशन लिख दी। इसके बाद अगर आप गौर करें इसके ऊपर, तो ये सिग्नल जो है वो x2 का डेरिवेटिव भी और x3 भी है, एक ही सिग्नल के दो नाम। तो हमने ये इक्वेशन लिख दी, x2 का डेरिवेटिव x3 के बराबर है। इनकी बेसिस पे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में जब इनको लिखेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म ये निकल के आ जाएगी। ठीक हो गया, ये आप प्रैक्टिस करके एक दफ़ा देखें। इसके बाद हमारी जो आउटपुट इक्वेशन है उसमें हमारे पास है
100x1 100x1 प्लस 20x2, कोई x3 नहीं है, तो हमारे पास ये हमारी आउटपुट इक्वेशन भी आ गई। अच्छा, अब हम स्टेट वेरिएबल फीडबैक कंट्रोल को जब फाइंड करते हैं तो उसमें हम कंट्रोल लॉ सब्स्टिट्यूट करते हैं, u इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्स हमारा स्टेट वेक्टर हो गया, x1 x2 x3 वाला। के एक मैट्रिक्स होती है जो के बराबर है इस तरह रो वेक्टर के, जिसमें k1 k2 k3 है। इसकी एक रो है, 3 कॉलम्स हैं। थर्ड ऑर्डर सिस्टम है इसलिए 3 कॉलम्स हैं और एक रो होती है हमेशा के मैट्रिक्स। ये कंट्रोल लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी u की जगह माइनस के एक्स रखेंगे तो हमारे पास एक जो सिस्टम बनेगा, यानी कि ये स्टेट वेरिएबल मॉडल जो चेंज आपका हो जाएगा, उसमें हमारे पास जो सिस्टम यानी कि x डेरिवेटिव इज इक्वल टू a माइनस बी के टाइम्स x। ठीक है, तो उस सिस्टम का जो सिस्टम मैट्रिक्स है, जैसे कि हमने एक स्टेट वेरिएबल फीडबैक कंट्रोल वाले लेक्चर में पढ़ा था, ये a माइनस बी के बराबर है। यानी नए सिस्टम की जिसमें हमने कंट्रोल लॉ यूज इक्वल टू माइनस के एक्स लगा दिया है, उस नए सिस्टम की जो सिस्टम मैट्रिक्स है वो a माइनस बी के बराबर है। यानी कैलीग्राफिक a जो है वो बराबर है a माइनस बी के का। तो हम यहाँ पे a और b, ये a हो गया आपका, ये b हो गया, और k मैट्रिक्स ये हो गई। इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास कैलीग्राफिक a मैट्रिक्स आ जाएगी। ये नए सिस्टम की सिस्टम मैट्रिक्स है। अच्छा, अब हम इस सिस्टम मैट्रिक्स की मदद से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे? एस आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट। एस आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट जब भी आप किसी भी सिस्टम मैट्रिक्स को रखेंगे एस आई माइनस ए और फिर डिटर्मिनेंट लेंगे, इससे आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, या फिर हम उसको कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, या फिर हम उसको जब जीरो से इक्वेट करते हैं तो कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमने इस नए ए को कैलीग्राफिक ए की मदद से एक नई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई है, तो ये यानी इसको आप एस आई माइनस ए में रखें, इसका डिटर्मिनेंट लें, तो हमारे पास ये निकल के आ जाता है जो आपको नजर आ रहा है। इसमें k1 k2 k3 वे अननोन्स हैं जिनको हम फाइंड करना चाहते हैं। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास जो है वो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जिसमें हमने अननोन्स को मालूम करना है, जो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, जिसमें हम प्लांट के साथ स्टेट वेरिएबल फीडबैक जब लगा देंगे तो ये उस क्लोज लूप सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये वो है जो कि हमने बनाई थी परफॉर्मेंस या ट्रांजिएंट रिस्पांस या सिस्टम बिहेवियर जो है जिस तरह का होगा, उसमें जितनी ओवरशूट सेटलिंग टाइम वगैरह, उसकी मदद से उसके डोमिनेंट पोल सेट किए थे और उससे हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई थी। तो जाहिर सी बात है कि हम चाहेंगे हमारा क्लोज लूप सिस्टम जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है वो ये हो, ताकि हमें वो रिस्पांस मिले जो हमें सवाल में दिया गया है, यानी से 9.5% ओवरशूट और 0.74 सेकंड्स का सेटलिंग टाइम। तो ये दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, और हम जब बराबर रखेंगे तो हम इनकी कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन की बेसिस पे जो है हमने ये तीन इक्वेशंस बनाई हैं जो कि नजर आ रही हैं। इनको सॉल्व किया तो K3 निकल आता है 10.9, K2 आ जाता है 132.08, K1 आ जाता है 413.1। तो हमारा मकसद जो था डिजाइनिंग का वो बेसिकली हमें ये कॉन्स्टेंट्स जो है K1 K2 K3 ये कैलकुलेट करने होते हैं। फिर आप इसको जो है K1 को x1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, K2 को x2 के साथ, K3 को x3 के साथ, इन तमाम को जमा करते हैं और u इज इक्वल टू माइनस के एक्स रख देते हैं। जो u उस प्लांट की इनपुट थी उसकी जगह पे इन तमाम कॉन्स्टेंट्स को करस्पॉन्डिंग x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई करा के जमा करके नेगेटिव साइन के साथ इनपुट पे दे देते हैं। तो आप जो है इसके लिए ब्लॉक डायग्राम भी ड्रॉ करें इसका, जिसमें क्लोज लूप सिस्टम का, जिसमें हमने स्टेट वेरिएबल फीडबैक कंट्रोल लगा दिया। दूसरा ये कि आप मैटलैब के जरिए से इसका जो है ना रिस्पॉन्स, इसका जो है स्टेप रिस्पॉन्स भी दिखाएं और सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो प्लॉट करके मुझे सेंड करें, और इस सवाल को सॉल्व करें। तमाम जितने भी हमने एग्जांपल्स सॉल्व किए हैं आज के लेक्चर में, उन तमाम एग्जांपल्स को सॉल्व करें, उनको समझें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही अभी मेरे से पूछें, मुझे कॉल करें, वॉइस नोट सेंड करें, और
इन क्यूरीज को जो है वो रिमूव करें और चीज़ों को समझ के सीखने की कोशिश करें, यही आपके काम आएगा। ग्रेड्स और नंबर्स जो हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट। नंबर्स भी लें मगर अपने कॉन्सेप्ट्स जो है उनको बनाने की और चीज़ों को सीखने की और स्किल अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें। तो जो आपको टाइम अभी दिया गया है इसमें आप आराम से बैठ के तसल्ली के साथ तमाम एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें और मुझे एक दफ़ा दिखा दें।